Everyone, this is Ali. First of all, subscribe my channel if you did not subscribe and press the bell button for notifications. So, this lecture in bilateral language. First, I explain in English. After that, I explain in the Urdu or Hindi language as well. So, today our topic is a plumbing side. So, we have to talk about what is the difference between a clean out and flow drain, and what is the main purpose for this. So, see, this is a plan. I start in English right now. This is a plan. This clean out will be at the last of the edge of the pipe. Always install like that. So it will be, clean out means you have to clean the pipe. You have to clean the pipe. You have to clean the pipe. So it will be no, trap or like that. So it will be clean. So something, if you any stuck like that, you can put the wire to clean this one. You have to put the chemical and you can put the bamboo woods as well. So it will be clean out. You will be, as per plumbing codes, whenever you have to the edge of the pipe, you have to provide a clean outs. So this is plan. I can show you the section as well. So you can see here now plan, and this is our section. So you can see in elevation of section, this one it will be go directly. This is no trap like that. So it will be go here. So this is detail for installation for clean out. So clean out cover like that. So you have to, this is cover, it will be, smell will be come out. You should be take care about that. It cover should be cover, tightened cover you have to provide with the rubber or like that. So it is be removable clean out plug adapter. This is this here. This is clean out cover at view. It will be go to the like that. So as per plumbing code, whenever the edge of the pipe, it will be provided to the clean out. So this is clean out. I think this concept is clear. So floor clean out cover as per VQ refers. This is connection layout. So this is Y types. Okay, this is Y types. Or we, this is 110 pipe for 110 for this oil pipe, or this pipe will be 75. We will be giving the specification of the drawings. So it will be, this is a finished floor, it will be section cuttings here. So you can see it will varies, it's different here. So it's approximate, you can thumb rule for a 1% slope, you change it in your mind. So it will be use UPVC pipes or this pipes 110 or 75 for this. So this is a band 75. So it will be clean out specifications. So I will be explain to the flow drain as well. So this is a flow drain here. So flow drain should be like that. It will be covered, it will be grilled here. See here, will water go inside here, or this is adjustable. This is a tile like that. This will be go here. So it will be trapped. The trap means water will be retained here. Always water retain here. It will be, all the smell is blocked from it. No smell is come out from the here. And you can see here, when you put the water, the level will be go more than, it will be here always water from here this level. So it will be stuck the smell here. So this is a plumbing code. We go to the floor drain this one. So this is here adjustable strainer, tiles, screw, concrete. So you can see here section. This is a Lecu's IC video, or this is locklet. This is a leveling for skewing and set of the screw. Okay, so you can see here, and this is as well. This is we say in the most of toilet we using, you see, this is gully trap. This is gully trap, like so simple of the floor drain. This is, in one floor drain 2 or 3 pipe is connection. So this is the main concept of gully trap. Keep your mind, gully trap, it will be 2 or more connection. We have to keep in the center of the toilet or center of the kitchen, mostly this one, and most of the 2 or 3 wash basin will be connect for this. Okay, so it will be called to the gully trap as well. This is PVC pipe, or this is PVC pipe made by this one. Steel light cover, you can see here. This is a gully trap section here. So it will be a simple trap or like that. It will be, see, water is come here, so it will be hold here. This water is come here, it will come here, it will be hold here. So it will come down from here and go there. So it will be hold the water.
So water first hold up to here, okay, then more water will become here, go from here, so it will be gully trap. So hope you understand in English, I understand in Urdu और हिंदी लैंग्वेज. सो अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर्स. देखिए हमारे पास प्लम्बिंग का टॉपिक है, क्लीन आउट और फ्लो ड्रेन में क्या फ़र्क है और गली ट्रैप में क्या फ़र्क है, ये हमारे पास है. तो आप देखिए क्लीन आउट क्या है. बेसिकली प्लान है क्लीन आउट का. तो जो पाइप का एच होगा लास्ट में होगा उसमें हम क्लीन आउट लगाते हैं, ठीक है. तो ये एज पर प्लम्बिंग कोड है. अच्छा, क्लीन आउट पाइप में लगाते हैं. इसमें इसका जो पाइप का स्लोप है 1%. अब थंब रूल ले लें इसमें, क्योंकि हमारे पास जो हॉस्पिटल जो कमर्शियल बिल्डिंग है या नॉन कमर्शियल बिल्डिंग है उसमें 1% लगाते हैं. वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो हम उसमें कैलकुलेशन करते हैं एज पर द पाइप साइजिंग पे. तो इस फॉर बिल्डिंग्स के लिए 1% होता है. अच्छा, ये इसकी दिया. अच्छा, इसमें जो है ये इसमें स्मेल कम बाहर आ सकती है, तो हम इसका कवर बहुत एयर टाइट कवर होता है, ठीक है इसमें. तो हम इसके सेक्शन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. देखें ये प्लान है, इसको आप प्लान देख लेंगे. तो हम इसके सेक्शन को डिस्कस कर लेते हैं. ये प्लान या एलिवेशन है, सेक्शन है. देखिए ये हमने सेक्शन या एलिवेशन है, ये सेम है. तो ये वेरीज होगा डेफिनेटली सी बात है. मे बी 20 सेंटी 30 सेंटी 40 सेंटी होगा. ये टाइटेंड होगा यहाँ से, ये रिमूवेबल होगा, ठीक है. क्या यहाँ से जो पानी जाएगा तो ये इसमें से में स्मेल भी आ सकती है जिसे टाइटन करते हैं. इसमें क्या होता है क्लीन आउट का मतलब ये है कि प्लम्बिंग कोड क्या कहता है, जो एज ऑफ पाइप हो, आखिरी पाइप एज हो, वो हमें क्लीन आउट लगाना है. तो हम यहाँ से केमिकल डाल सकते हैं, यहाँ से हम जो है वायर के ज़रिए इसमें क्लीनिंग कर सकते हैं. और बम्बू जिसे कह लें या बाँस कह लें इसको आप उर्दू में, तो ये हिंदी बाँस कह लें, तो वो जो स्टिक होती है लकड़ी की उसमें हम डाल के उसको क्लीन कर सकते हैं. तो ये फिनिश फ्लो लेवल है, ये कैरेमिक टाइल्स है, ठीक है. ये रिमूवेबल है, ये कैरेमिक लेवल, तो हम इसको क्लीन कर सकते हैं. अच्छा, ये पीवीसी पाइप यूज़ करते हैं इसमें ज़्यादातर, ठीक है. टॉयलेट्स इसमें आपका ये पीवीसी है, पीवीसी पाइप एज पर स्पेसिफिकेशन ऑफ द ड्राइंग्स में होता है, ठीक है, या प्रोजेक्ट में दिया हुआ था. ये बैंड है इसमें. अच्छा, सॉइल पाइप के लिए हम जो 110 ले लेते हैं और वेस्ट पाइप के लिए हम उसको 75 ले लेते हैं. तो छोटा प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट तो हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं. एक थंब रूल है, ठीक है. ये तो ये तो आपका क्लीन आउट क्लियर हो गया. अब मैं फ्लो ड्रेन पे जाता हूँ. क्या फ्लो ड्रेन जो होता है, बेसिकली फ्लो ड्रेन जो है पानी का फ्लोर का एरिया होता है उसको ड्रेन करने के लिए होता है. उसमें हमारे पास पी ट्रैप लाजमी होता है. ये ट्रैप लाजमी होता है. देखिए ये पी ट्रैप बना हुआ है, यहाँ से पानी जाएगा तो ये यहाँ पे ट्रैप रहेगा, इतना पानी यहाँ खड़ा रह जाएगा. इस खड़े होने से क्या होगा, यहाँ से कोई भी स्मेल यहाँ से कम आउट नहीं होगा, कोई स्मेल नहीं होगा. ये ग्रिल टाइप होता है, पानी यहाँ से गया, इसमें यहाँ से बाहर नहीं आ रहा. तो ये इसकी स्पेसिफिकेशन इंस्टॉलेशन की. ये टाइल लगा हुआ है, स्क्रू है, एडजस्टेबल स्ट्रेनर है इसमें, ठीक है. वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन है, कॉन्क्रीट है, ठीक है. इसमें डिटेल्स में आपको बता देता हूँ. ये 3 लेवल ऑफ द सीलिंग स्टिक्स है और ये आपका ये है, ठीक है. तो ये आपका समझ में आ गया. अच्छा, इसमें देख लें आप नंबर 3 चीज़ है यूपीवीसी हमारे पास गली ट्रैप. गली ट्रैप भी सो सिंपल आपका पी ट्रैप की तरह ही काम कर रहा होता है. हम समटाइम पी ट्रैप लगा देते हैं. अगर कोई टॉयलेट एरिया है जहाँ पर 4-5 वॉश बेसन लगे हुए हैं तो हम एक सेंटर में फिर आपका गली ट्रैप लगा देते हैं. उसमें क्या है 3 साइड पे या 4 साइड पे होता है. देखिए 1 2 3 और एक बैक साइड पे 4 साइड पे होता है. तो हम सारे पाइप यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है. और इसका सेक्शन आप देख लें, इसमें भी ऐसे ही होता है. ये ट्रैप होता है, यहाँ से पानी आएगा, ये ट्रैप रह जाएगा, ठीक है. ट्रैप का जब भी यहाँ से उसका लेवल यहाँ तक पहुँचेगा तो फिर ये पानी यहाँ से निकलेगा, ठीक है. तो ये पानी यहाँ पर हर वक्त खड़ा रहेगा. ये देखें यहाँ पे इसको स्टक किया हुआ है, यहाँ पर लगा दें तो हर वक्त ये पानी यहाँ खड़ा रहेगा. तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये यहाँ तक पानी खड़ा हुआ है, तो यहाँ से स्मेल यहाँ से बाहर नहीं आ सकेगा, ठीक है. तो ये आपका क्या कहलाता है, गली ट्रैप. तो आप याद रखिएगा गली ट्रैप और आपका पी ट्रैप, गली ट्रैप और आपका फ्लो ड्रेन में गली ट्रैप या पी ट्रैप या जो आप कह रहे हैं इसको आप क्लीन आउट में क्या डिफरेंट है. होप थैंक यू फॉर वॉचिंग. तो बहुत शुक्रिया देखने का. दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें. इसमें हमारा फेसबुक पेज लॉन्च हो गया फाइनली, इंजीनियर्स के नाम से है. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, उसमें भी अब काफ़ी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, तो आप भी शेयर करें. व्हाट्सएप ग्रुप हमारे पास है, अगर किसी को ऐड होना है तो यस लिखते हैं, मैं इसको ऐड करता हूँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय.